Yes, sir. हाँ सर. Am I audible, sir? Yes, I am audible. हाँ सर. हाँ सर. ज्यादा देर हो गया आज तो. हाँ सर. हाँ सर. Am I audible, sir? आपका नेटवर्क इशू हो रहा है क्या सर? हेलो सर. Am I audible? Yes, I am audible to you. Yes, sir. Audible? हाँ सर. Yes, yes. Yes. Yes, carry on. हम कहाँ पर पहुंचे थे? हाँ सर, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में था. Isotonic solution. Yes, carry on. Sir. That means those type of solution which have same osmotic pressure is basically called isotonic solution. Okay. Suppose here I am taking that means two solution through a semi-permeable membrane. Here A and here B. If it has 1 atm pressure in it, if it has 1 atm, then solution cannot move either side. Then it is basically called isotonic solution. Yes, sir. Okay. Isotonic solution. Or suppose, am I audible, sir? Suppose yes, audible. I Yes, am, yes. No problem. sir. Suppose I am taking here two solution. Here it has 2 ATM and here it has 1 ATM. Okay. So 2 ATM, sir, that means osmotic pressure here more. So it from here to here. So this solution, that means 2 ATM solution is called hypertonic solution, and whereas 1 ATM solution is called hypotonic solution. Okay. If that means if two solutions are contact with separated by a semi-permeable membrane, if one has a higher osmotic pressure than the other, the higher osmotic pressure solution is called hypertonic, and whereas the lower osmotic pressure solution is called hypotonic solution. Yes, sir. Hypertonic and hypotonic. Is it okay, sir? Hypertonic and one is hypotonic. Sir. Yes, sir. Yeah, next move on colligative property. Yes. What is there are four. property? That means, sir. Those type of property which depend on the amount of substance dissolved on the solution. These are basically called colligative property. Colligative property are of in solution. There are four colligative properties there. One is lowering of vapor pressure, and one is elevation in boiling point, whereas another is depression in freezing point, and another one is osmotic pressure. Yes, sir. Relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, and one is that is called depression in freezing point, and the last one is osmotic pressure. Yes, sir. That means those property which depend only depend on the amount of substance dissolved on the solution. Okay, that is called basically colligative property. Yes, sir. Yes, explain one by one: vapor pressure, freezing of diffusion, boiling point of diffusion, osmotic pressure. Okay, sir. Okay, sir. Yes. Suppose I am taking first one is relative lowering of vapor pressure. Okay. So suppose I am taking one container. Okay. Here suppose I am taking this container. Here the partial pressure, that means totally it is now totally in only solvent is there. Here the partial pressure of the solvent is P0A. Okay. After adding some solute in it, then its pressure become PA. Okay. Because its pressure, why its pressure lower? Because the solute substance occupy the surface area of the solvent. Okay, solute substance occupy the surface area of the solvent. Therefore, the vapor pressure of the solvent decreases. So this is the in
only pressure of solvent and this is the pressure of solution. Okay, now that means pressure is decreasing now. So decrease of pressure is basically P naught A minus PA. That is change in pressure is equal to P naught A minus PA. And relative lowering in vapor pressure means the change in pressure divided by the initial pressure. That means P naught A minus PA divided by P naught A. Okay, that is the relative lowering in vapor pressure. Okay, and from it we know that relative lowering in vapor pressure directly proportional to the, that means relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. Yes, sir. Relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. Is it okay, sir? Yes, okay. Okay, then yeah, from here we can also explain that boiling point, elevation in boiling point. You can see that means the pressure already decreased in the solution. Okay, in solvent the pressure was more. When solution become when we had solute, then the pressure lower. Okay, to get the boiling point is that means where the boiling point is that where the pressure of the solution become the atmospheric pressure. One atomic pressure is called basically boiling point. So due to since the pressure lowered, so therefore to attain the atmospheric pressure, that means 1 atm, we have to heat the solution more. That means the boiling point is totally increase. Yes, sir. Boiling point also increase. Is it correct, sir? Yes. So here delta TB is equal to KB into M. Delta TB, the elevation in boiling point is equal to KB into M. Yes, sir. What's the difference between rule of ones of factor? Sir. One top equation or one top factor? What's the difference? वन टॉप इक्वेशन तो मतलब सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, दैट मींस कोलिगेटिव इक्वेशन के साथ डील करते हैं वन टॉप इक्वेशन. और द वन टॉप फैक्टर तो दैट मींस वन इज ए रेशियो. वन टॉप फैक्टर इज ए रेशियो सर, whereas it is a number type of things, whereas वन टॉप इक्वेशन इज ए इक्वेशन सर. इज इट और क्या ही होगा सर? हाँ सर, दैट विल बी द. हाँ सर. क्या बताया आपने? हाँ सर, मतलब वन टॉप फैक्टर इज ए रेशियो बेसिकली. Okay, that means Van der factor is we can ratio, that means observed colligative property divided by normal colligative property, or normal molar mass divided by observed molar mass is like that. And Van der equation to matlab we where when we place the Van der equation, a Van der factor which that means colligative property equation. Suppose like relative pi is equal to ICRT, where I is the Van der factor. Yes, sir. Is it correct, sir? Yes. Want of factor, want of equation. Osmotic pressure. Now, what the factors osmotic? Sir. Osmotic pressure. What is Hoff factor? Hoff factor. First time सुना है मैंने. Hoff. HOFF, Hoff factor. What is Hoff factor? No idea, sir. देखो. Hoff factor तो no idea, sir. क्या होगा ये? भांटॉप का ही था सर. थ्योरी तो भांटॉप का ही था ऑस्मोटिक प्रेशर का. पाई इज इक्वल टू मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन से मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है.
Yes, sir. ऑस्मोटिक प्रेशर का मेन एप्लीकेशन क्या है, इसको क्या डिफाइन क्या सर करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली हम लोग मतलब जो मतलब डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, उसमें हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं। ओके। यस। और सर ऑस्मोटिक, हाँ सर, ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग मतलब जो ये क्या बोलते हैं, लोगों को मतलब सलाइन भी देते हैं, तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यस सर। मतलब मेनली सी वाटर का डीसैलिनेशन करने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यस सर। और क्या होगा, यही सर। सोसाइटी में क्या यूजेस है इनके? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब हम लोग इसको we can purify the solvent, that means we can purify the solution। मेन एप्लीकेशन सर यही होगा, we can purify the solution। suppose what it is called, suppose this solution is taken, here concentration is more, here less concentration, so less concentration से यहाँ तक जाएगा, तो मतलब यही होगा। हाँ सर, मतलब कुछ प्योर करने के लिए हम लोग मतलब बेसिकली यूज करते हैं। और सर getting fresh drinking water, we use reverse osmosis application। हाँ सर। इज इट ओके सर? यस। हाँ सर। कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशन के, वो बताइए आप। हाँ सर। हाँ सर। Distinguish between the boiling point of a liquid and the normal boiling point of a liquid. Explain. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड मतलब मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोग का यह होता है, दैट मींस एट वेयर that means vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure, it is basically called boiling point। okay, okay, so normal boiling point मतलब when the solution is totally pure, okay, then it is, I think then it is called normal boiling point। if uh if the solution is not pure, I think that means that means liquid is not pure, some impurity is there, then it is, then this boiling point is called, sir, what it is called, boiling point, sir, boiling point of liquid, is it correct, sir? Boiling point in the temperature which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the surrounding pressure. Yes sir। Normal boiling point is the temperature at which the vapor pressure is 1 atmosphere. वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा, मतलब सराउंडिंग के प्रेशर जब होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं मतलब, और 1 atm होता है तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके सर, ठीक है, यस, थैंक यू नॉर्मल सर। कंडीशन पे होता है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ सर, सो मतलब क्या होता है, when we place water with some, that means solution, okay, so matlab water is a pure solvent now, so water totally move towards the, that means water move through the semi permeable membrane, okay, until the equilibrium is reached, okay,
water move towards the through the semi-permeable membrane until the equilibrium is reached. Okay, or this that means this osmotic that means this process can be stopped by employing external pressure. Okay, some of the external, if we apply some external pressure, then this that means movement of water can be stopped. Okay, if external pressure, that means if the external pressure greater than the osmotic pressure is applied for the flow of solvent molecule, that is in reverse direction. Okay, reverse, that means from solution, what it is called, solution towards pure solvent. हाँ सर, यही होगा, और क्या ही बोलूं मैं। हाँ मतलब अगर एक प्योर सॉल्वेंट है, ओके, मतलब पूरा एक सॉल्यूशन है, तो वहां पे वाटर है, और एक में मतलब थोड़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो मतलब डाइल्यूट से अगर मतलब पूरा यहाँ तक जाएगा, तो ये सॉल्यूशन मतलब पूरा प्योर हो जाएगा। यही तो मतलब ऐसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यस, तो जो आंसर है आपने एनालिसिस किया मैं बता देता हूँ, उसको आंसर दे देता हूँ। व्हेन प्रेशर greater the osmotic pressure is applied on the salt water side of a semi permeable membrane, हाँ, water molecule flow through the membrane towards pure water side. यस सर। देन ऑलमोस्ट ऑल सॉल्ट सॉल्यूशन का जो वाटर होगा वो टोटली प्योर वाटर के चला जाएगा, तो मतलब क्या होगा, प्योर वाटर मिल जाएगा हमको। हाँ सर। Next question. यस सर। CCl4 and water are immiscible, whereas ethanol and water are miscible in all proportional portions. Correlate this behavior with molecular structure of these compounds. हाँ सर, मतलब सर इन क्वेश्चन से रिलेटेड है आपका आइडियल सॉल्यूशन से। हाँ सर, यस सर, दैट मीन्स इन मिथानॉल एंड वाटर there is a possibility of hydrogen bonding. Okay, first thing, through chemical bonding I am explaining now. That means methanol and water has hydrogen bonding in it, so therefore it is soluble in water. Okay, soluble. Whereas carbon tetrachloride CCl4, though chlorine is little electronegative, but it cannot form hydrogen bond with water molecule, or that means carbon tetrachloride is non-polar in nature, so therefore this cannot form hydrogen bond with water, and therefore it is immiscible in water. Yes sir. Yeah, हाँ सर, यही होगा। यस, आंसर रिमाइंड करा देता हूँ। CCl4 is a non-polar covalent compound. Clear? हाँ सर। Yes. Hence it is can neither form hydrogen bond with water molecules. Yes. Nor it can break hydrogen bond in water molecule, whereas water is a polar compound. Yes sir. Therefore CCl4 is insoluble in water. हाँ सर। Ethanol is a pure polar compound. Hence it can form hydrogen bond with water. Therefore it is a miscible with H2O in all proportions. हाँ सर। हाँ, yes, I have told sir, that is the same thing I have told. Next question is, write an example of a material used for making semi-permeable membrane for carrying out reverse osmosis. ये सर इसका मैं भूल गया, मतलब डायरेक्टली, मतलब तो हम लोग का
सिलिका का एक था, इसका नेम डायरेक्टली भूल गया, मतलब एक था। सेलुलोज, सेलुलोज, यस सर, यस सर, cellulose, सेलुलोज, सॉरी, acetate and सेलुलोज एसीटेट, polyamide are the सेलुलोज, example of material used for the semi-permeable यस सर। membrane included. मतलब डायरी में लिखा है शायद यहाँ पे, मतलब मैंने लिखा है, ये प्रिपरेशन के लिए लिखा था, मतलब भूल गया मैंने। हाँ सर, रिवाइज हो जाएगा। Yes, no problem. Next question, what is semi-permeable membrane? That means semi-permeable membrane is just those type of membrane where it can from where that means only liquid particle can pass. There is no solute, like solid particle cannot pass through it. That it is called semi-permeable membrane. Is it okay, sir? Yes. Semi-permeable membrane is a continuous sheet of a film of a suitable material, natural or synthetic, which has pores such that the solvent molecule can pass through, but big it. molecule of the solute cannot. Solute cannot pass through it. Yes. अच्छा, ये तो बेसिक पूरा। Next question is, how does a springable of a salt help in clearing the snow-covered road in hilly areas? Explain the phenomena involved in the process. हाँ सर, that means it basically decreases the freezing point of the solution. Okay, that means it decreases the freezing point, so easily we can move easily the car, everything through it. That means if we place pour some salt on the hilly area, that means in snow, then the freezing point of the snow, that means water decreases automatically, and freezing point of something is called water also, that means petrol or diesel also decreases. So therefore we can easily go through it. Is it okay, sir? Yes. When salt is spread over snow-covered the road, depression a freezing point of water takes place. At the ambient temperature, snow start melting and it's a help in clearing the road. Clearing the road. Yes, sir. Definitely. Why is the vapor pressure of an aqueous solution of glucose lower than that of water? Sir. That means when we place water, when we put some water, glucose on the water, then the surface of water molecule is covered by glucose molecule. Okay, so therefore glucose interact with water molecule also, and therefore water molecule cannot evaporate easily. Therefore the solution automatically, that means solution of the vapor pressure of the whole solution decreases. Yes, sir. Mixing of acetone with chloroform takes place with reduction in volume. What type of deviation from Rolle's law is shown in this case? सर negative होगा, negative deviation. Yes. Why soda water bottle kept at room temperature? Fish on opening. ये तो basic है. मतलब क्या सर, क्या पूछा आपने? Why soda water bottle kept at room temperature? Fridge on opening. Because
sir, if we decrease, that means increase the room temperature, then solubility will automatically decrease. That's why solubility of carbon dioxide in the, हाँ sir. Both pressure inside the bottle and solubility of carbon dioxide reduce when a soda water हाँ bottle is opened at room temperature हाँ sir. and Yes. normal pressure condition, therefore causing the gas bubbles to escape and soda हाँ water freezing. yes sir. Yes yes, that is the, मतलब solubility automatically decrease हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ जाता है. The next is, what is the significance of Henry law constant K? Significance, that means it is takes place, is only applicable in, that means लो प्रेशर. हाँ सर, लो प्रेशर में ही था. टेम्परेचर भी, मतलब टेम्परेचर भी लो नहीं होगा, यही था सर. हाँ, इट इज एप्लीकेबल ओनली एट 1 मिनट सर, ये मतलब देखना होगा मुझे. प्रेशर प्रेशर एंड टेम्परेचर का कुछ था, मतलब एक हाई प्रेशर में ही था शायद. क्या था, 1 मिनट सर. हाँ सर. दैट मीन सर, प्रेशर मतलब नॉट टू लो होता है, मतलब प्रेशर इतना लो नहीं, नॉट टू हाई, और टेम्परेचर भी इतना लो नहीं होना चाहिए फॉर हैंडीज. and and the gas is not highly soluble, or gas does not gas cannot does not dissociate also. Yes, the main significance of Henry's law. Is it correct sir? Yes. Pressure to high, that means pressure is not too high, temperature is not too low, the gas is not highly soluble, okay, or does not enter into chemical, that means chemical reaction भी नहीं होना चाहिए, और उसके बाद मतलब डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए. हाँ सर, यही है सिग्निफिकेंस. Higher the value of Henry law constant, lower the solubility of gas in the liquid. हाँ सर. Why are aquatic species more comfortable in cold water in comparison to warm water? That means in cold water, that means in low temperature, the solubility of oxygen is basically increased. That's why. Yes sir. That's why they can easily, in water, cold water, solubility is basically increase. So solubility of gas is basically increased. So therefore, aquatic animal can easily go through it. But when the temperature is increased, then the solubility also decrease. So therefore, the aquatic animal cannot rest. That means, हाँ सर, यही होगा. रेस्पिरेशन सिस्टम मतलब काम नहीं करता है, इसलिए. और सर, सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा सकता रहेगा एक दिन. हाँ सर. बेसिक है सारी चीजें. हाँ सॉल्यूशन सर. में ये, बेसिक चीजें, बेसिक जो बेसिक होती है हाँ सर. केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, हाँ नॉर्मलिटी सर, यही मोलैलिटी, ये चीजें, ये तो सब बेसिक है. ये चीजें अगर आप कर ये तो लेते आए हैं थे. तो सॉल्यूशन पूछिए क्या, क्या. आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना. नहीं है कि, यस सर, डेफिनेटली. यस, इतना हो गया. हाँ बाकी सर. ड्रॉबैक लिमिटेशन है कुछ सॉल्यूशन की, वो बता सकते हैं आप. दैट मीन सर, we
दैट मीन जो भांटर फैक्टर जो लास्ट में आता है, तो ड्रॉबैक लिमिटेशन तो इतना नहीं हो जाएगा उसके लिए, मतलब कैलकुलेशन टू डिटरमाइन दैट मीन्स exact concentration or exact anything. So basically, what it is called, Raoult's law is applicable only in sir low concentration solution. That means only solution is applicable, solution colligative property only in dilute solution only, sir. That is the main limitation. We cannot deal with a highly concentrated solution. Yes, or any other? Or sir, yes, sir. Or if the molecule can, that means Raoult's law also not obeyed if the molecule is dissociated in nature or associative in nature, then Raoult's law is not obeyed, sir. That is also the mainly, sir. The basic things come from Raoult's law and Henry's law only, na. So Raoult's law for to obey all the things. That means Raoult's law should be obeyed. Raoult's law only obeyed when the solution is dilute, and when the that means solute are dissociative or associative in nature, then Raoult's law is not obeyed. Yes, sir. Is it okay, sir? Yes. अब थोड़ा पॉइंट आउट वर्क कीजिए थोड़ा और चीजों पे। अब हमारा सॉल्यूशन हो गया आज, ठीक है। और सर क्या कल मतलब इक्विलिब्रियम होगा या क्वांटम होगा? कल तो क्वांटम हो जाएगा मेरा, मतलब इक्विलिब्रियम और रिवाइज हो क्वांटम जाएगा। दोनों पे हम वर्क करेंगे कल। ओके सर, ठीक है। और सर फाइनल मॉक परसों से दे सकते हैं हम? इज इट यस, पॉसिबल? परसों बिल्कुल से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। परसों से कंप्लीट हो मतलब, जाए तो। और तो मतलब टाइम तो नजदीक आ गया ना, इसलिए। और सर थोड़ा आप मतलब एचआर का क्वेश्चन भी होगा तो मतलब आप भेज दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगता, मतलब होता। क्या चीज? एचआर मतलब सर जो मतलब स्टार्टिंग में होता है ना, नॉर्मल क्वेश्चन जो एचआर वगैरह, एचआर क्वेश्चन मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा ऐसा। हाँ बिल्कुल। हाँ सर। और तो मतलब असम से तो इतना लोग नहीं जाते हैं ना, इसलिए मतलब कोई ऐसा भी नहीं है मतलब कि क्या क्या पूछा है। असम से तो इतना मतलब यूपीएससी में नहीं जाते, ओनली 3-4 लोग ऐसे ही हर ईयर मतलब क्लियर करते हैं मेन यूपीएससी, और बाकी तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा। बस प्रैक्टिस हो गई है अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीजें अब हाँ रिवाइज सर, होगी तो प्रैक्टिस। सब चीजें हो जाएंगी। हाँ सर, अभी तो पूरा फुल रिवाइज चलेगा, तो उसके बाद सर और एक। हम्म। इतना रिवीजन हो गया बहुत है भाई। हाँ सर, पूरा ऑलमोस्ट तो हम लोगों ने पूरा फुल केमिस्ट्री ही देख लिया ऑलमोस्ट। बाकी तो मतलब अगर कुछ यहाँ से नहीं आएगा तो आई एम नॉट इन टच बोल देंगे। सब रिवीजन हो गया है मोस्टली। अब ये इनको और अच्छी तरह से कर लेंगे तो और बेनिफिट होगा हमारे लिए, बेनिफिट। हाँ सर, अच्छे से। और सर डिफिनेशन वगैरह पूरा फुल डिफिनेशन अच्छे से होना चाहिए। अभी अभी मतलब लिख लिख के पढ़ूंगा पूरा एक टॉपिक, सब हो मतलब जाएगा, तीन सब हो चार बार जाएगा, अगर सब देख हो लूंगा तो जाएगा, अच्छा सब हो होगा। जाएगा। बाकी लोगों का फुल मॉक भी हो गया क्या सर? नहीं हुआ? चल रहा है, सबका चल रहा है, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। कोई कब बैक कर जाता है, कोई कब छुट्टी कर जाता है। हाँ सर। सर, किसी ना किसी का वर्क रहता ही है। कोई कब छुट्टी कर देता है, कब कोई छुट्टी कर देता है। किसी का कुछ, हाँ किसी का सर। कुछ, ऐसे ही चलता रहता है, कंटिन्यू नहीं हो पाते। कंटिन्यू हो गए, हाँ सर पूरा मतलब। सिलेबस करा दिया एक महीने। कम से कम 15 मॉक से ज्यादा तो सबके हो ही चुके हैं। आपका भी 15 हो गए। हाँ सर, हो गया, बहुत हो गया। और मतलब मैं तो मतलब पहले मतलब इतना कंसिस्टेंट नहीं था, अभी तो पूरा कंसिस्टेंट हो गया हूँ मतलब। 15 मॉक अभी तो तो। सबके हो गए हैं। हर एक हाँ सर। कैंडिडेट के हो गए 15+। हाँ सर। फाइनल तो अभी किसी के स्टार्ट नहीं हुए। सर एक बात पूछना था, मतलब उन लोगों का मतलब वहाँ पे तो टीचिंग एक्सपीरियंस था, उन लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है क्या? टीचिंग नहीं है, इंडस्ट्री। अच्छा। इंडस्ट्री के इंडस्ट्री हैं से भी सब। इंडस्ट्री में वर्क करते हैं सब, तभी तो कह रहा हूँ आपका टीचिंग में है, आप टीचिंग में मास्टर हैं, आप इतने पढ़ा रहे हैं तो बेनिफिशियल है। हाँ। और सर मतलब मुझे एक मतलब एक पर्सन ने मुझे मैसेज दिया था फेसबुक में, तो उनका मतलब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। कोलकाता का है, वेस्ट बंगाल का, पोस्ट तक कर रहे हैं, तो उसका नहीं हुआ।
तो उन्होंने इसमें मुझे पूछा कि हाँ इसमें सर पोस्ट कर रहा है, तो उसका नहीं हुआ इंटरव्यू में सिलेक्शन। किसमें? इसमें ही, कब इसमें दिया था? मतलब जब मतलब लिस्ट निकला था, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब लिस्ट आया है कुछ ऐसा वैसा। तो उन्होंने मतलब मुझे भेजा कि क्या तुम्हारा नाम है? नाम उत्पल कविता, कुछ विभास था सर, विभास समथिंग। कब दिया था इंटरव्यू? नहीं नहीं इंटरव्यू नहीं दिया था, मतलब उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मतलब नाम नहीं आया इंटरव्यू में, मतलब इंटरव्यू में ओनली 11 लोग सिलेक्ट किया है ना, तो तो उसमें उनका उसका कोई, नाम उन्होंने नहीं है वो मतलब। जो एक्सपीरियंस वाला वो सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक की होगी। हाँ मतलब पोस्टडॉक, मतलब यूपीएससी ने पोस्टडॉक नहीं लिया, पोस्टडॉक एक्सपीरियंस में ऐड नहीं किया। पोस्ट डॉक से क्या है, उसका पीएचडी कर पोस्टडॉक, रहे हैं तो एक्सपीरियंस मांगा था ना उसमें, 1 ईयर का रिसर्च का, हाँ टीचिंग। हाँ हाँ वो तो नहीं दिया उन्होंने, मतलब उसका नहीं था, इसलिए मतलब हाँ नहीं ना, डिस्क्वालीफाई तो हो गया। वैलिड नहीं होगा। एक्सपीरियंस जो हाँ सर्टिफिकेट मांगा था वो टीचिंग का, वो 6000 ग्रेड पे का होना चाहिए अगर टीचिंग में है, या फिर इंडस्ट्री का बड़ा होना चाहिए, तब वो उनका होगा तो वैसा होगा वैलिड। तो भी तो रिजेक्ट कर दिए, इतने फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुए? खतरनाक फॉर्म रिजेक्ट किए। तीन आप एक टोटल बार ये 296, बताइए, 136 100। मतलब कुछ कुछ का तो नेट भी नहीं था, मतलब पूरा ऐसे नहीं, ही गया। मुझे तो ये लग रहा है 136 फॉर्म तो ऐसे अप्लाई किए जिनके पास नेट और सेट ही नहीं है। अब आप बताओ, आपके पास नेट नहीं है तो आपने अप्लाई क्यों किया? हाँ मतलब रुपीस कम है ना, 25 रुपीस है, तो वन सब थर्टी लोग सिक्स अप्लाई वन कर थर्टी देते हैं। सिक्स 136, एक दो नहीं, 136। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें इसका मिस्टेक क्या मतलब, किया जाए, कंपटीशन वैसे ही कम हो गया। मतलब हाँ मैंने तो सोचा भी नहीं था मतलब ऐसे मतलब ये सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मतलब मुझे लगा था एग्जाम वो होगा, क्यों लेकिन नहीं एग्जाम जाएगा? नहीं आपके हुआ। पास एक्सपीरियंस था, वो वैलिड वाला है, आप तो पहले से 6000 जॉब हाँ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वैलिड होगा? हाँ सर, हाँ सर, अभी तो एक्सपीरियंस पूरा मतलब बहुत है मेरा, 3.5 ईयर्स का। तो बाकी तो तो पता नहीं अभी, और इंटरव्यू, लेकिन सर एक ही दर है, मतलब पीएचडी नहीं है ना, एक ही दर है वो, मतलब अगर उसको, ये तो मतलब गलत किया, कुछ भी रिसर्च पेपर भी पब्लिश नहीं किया ना उसके लिए, बाकी सबका पीएचडी होगा, मेरा नहीं होगा। ऐसा ऐसा है। इसमें तो सर नहीं मतलब है, पूरा ऐसा कोई वो नहीं है पीएचडी। हाँ, वो तो वन इंटरव्यू 11 में ही डिपेंड, कैंडिडेट ही तो है। हाँ सर, इंटरव्यू में ही डिपेंड करेगा ना पूरा होल। पूरा इंटरव्यू बेस है, उससे कुछ नहीं हो रहा। हाँ सर, यही सर, बाकी आप सर ये भेज देंगे कल, कल हम लोग इक्विलिब्रियम एंड, इक्विलिब्रियम एंड दिस, इक्विलिब्रियम का तो एक ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अच्छे से, मतलब वो ली सेटलर प्रिंसिपल, ये तो पूछेगा ही पूछेगा इक्विलिब्रियम से। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू कोई फॉर, प्रॉब्लम नहीं, हाँ सब सर, डिस्कस हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल काइनेटिक्स ऑफ थ्योरी है, गैसियस स्टेट है वो भी बचा हुआ है, क्वांटम है, हाँ वो सर, सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक हाँ है ना? सर, हाँ सर, ठीक है ऑलमोस्ट, हाँ ठीक है, ठीक है, हम ओके, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके, हाँ थैंक सर, यू। थैंक यू, थैंक यू सर।